I am going to discuss about the oxygen family, chemical properties. Oxidation state. Oxidation oxidation state -2, but in case of OF2 and O2F2, oxidation state is +2 and +1. Sulfur, selenium, tellurium and polonium show +2, +4 and +6 oxidation state. Oxygen show oxidation state. Oxidation state. Oxygen show oxidation oxidation state, one state of -2, but in case of OF2 and O2F2, oxidation state is +2 and +1 respectively. Sulfur, selenium, tellurium and polonium so +2, +4, +6 oxidation state. Stability of +6 oxidation state decreases down the group. Stability of +6 oxidation state decrease करता है down the group and +4 oxidation state increases down the group. Due to inert pair effect. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. -1 oxidation state. -2 to +6, -2 to +6 and -2 to +6, -2 to +6. In OF2, the oxidation state of oxygen is +2. Here oxidation state, oxygen show oxidation state of -2, but in case of OF2 and O2F2, oxidation state is +2 and +1 respectively. Fluorine is more electronegative element, and sulfur, selenium, tellurium and polonium so +2, +4, +6 oxidation state. Stability of +6 oxidation state decreases down the group. जैसे जैसे हम लोग ग्रुप के नीचे आते जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की घटती जाएगी एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो स्टेबिलिटी जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप में. क्यों करेगी? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण करेगी. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फॉर्म वोलेटाइल हाइड्राइड्स. This is evident
in their boiling point increases. Order of boiling point of hydrides is H2S is lower than H2SE and lower than H2TE and lower than H2PO. All elements of the group form volatile hydrides. This is evident in their boiling point increasing order of boiling point of hydrides is H2S lower than H2SE, lower than H2TE, lower than H2PO. Down the group boiling point increases. Down the group, the group boiling point increases because of increasing molecular weight. हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मॉलिकुलर वेट बढ़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, which increases the van der Waal interaction. H2O has abnormally high boiling point due to hydrogen bonding. H2O has abnormally high boiling point. क्यों हाई बॉइलिंग पॉइंट है H2O का? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. H2O इज ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है. थर्मल स्टेबिलिटी चेक करेंगे. द थर्मल स्टेबिलिटी of hydrides decreases in the order H2O, H2S, hydrides decreases in the order क्या रहेगा? H2O is greater than H2S, H2S greater than H2SE and H2SE greater than H2TE and H2TE greater than H2PO. ये ऑर्डर रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स की. स्ट्रेंथ चेक करेंगे. द स्ट्रेंथ ऑफ hydrides as acid increases in the order क्या रहेगा? ऑर्डर H2O is lesser than H2S. H2O is smaller than H2S. H2S is smaller than H2SE and H2SE is smaller than H2TE. The strength of hydrides as acid, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप में. तो यहाँ टी का स्ट्रेंथ, हाइड्राइड्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है. द रिड्यूसिंग पावर
of the hydrides increases from H2O to H2PO. Thank you.